Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to Siasat-Ms intensive supplementary coaching classes. एक सेकंड इसको ऑफ करो ना पहले से Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to Siasat-Ms intensive supplementary coaching classes. In this session, we will be discussing Unit 3, Chapter 3, Accounting for Not-for-Profit Organizations for second year students. The weightage for this chapter is for 7 marks. One problem will be asked for 10 marks and one problem will be asked for 5 marks. So the total becomes 15 marks and a 2 marks theory question may also be asked. So before entering into the chapter, let us understand the meaning of the chapter, not-for-profit organizations. Organizations are of two types, profitable organizations and not-for-profitable organizations. जो organizations business में अपने profit के लिए काम करते, उन लोगों को हम profitable organizations बोलेंगे. The organizations which earn profits through buying and selling of goods, those are considered as profitable organizations. And the organizations which render their operations to render service to the society, not to make profits. जो organizations society के लिए service के लिए काम करते, ना कि profit कमाने के लिए, उन organizations को हम not-for-profit organizations बोलेंगे. Now, who comes under the category of not-for-profitable organizations? Let us take few examples. Education institutes, hospitals come under the category of not-for-profit organizations. तालीमी इदारे और हॉस्पिटल जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे. क्यों आएंगे? ये लोगों का मकसद सर्विस देना रहता, सोसाइटी को सर्विस देना रहता, ना कि पैसा कमाना रहता. अब पहला सवाल ये आएगा, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दे मेक मनी, हॉस्पिटल्स इवन दे मेक मनी. हॉस्पिटल्स में एडमिशन, पेशेंट को एडमिट भी करे तो पैसे लेके करते, डिस्चार्ज भी करना रहा तो पैसे लेके डिस्चार्ज करते. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी फीस लेके पढ़ाते, फ्री में तो ही नहीं पढ़ाते. फिर ये लोग पैसे कमा रहे. इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर अर्निंग, हॉस्पिटल्स आर आल्सो अर्निंग, बट स्टिल दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बावजूद वो नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में आते. क्यों आते? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फीस इसलिए चार्ज करते क्योंकि वो लोगों को वहां पे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के एक्सपेंसेस मीट करना रहता, वो लोगों को अपने अखराजात निकालना रहता है, जैसे कि पेमेंट ऑफ बिल्डिंग रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल. उसी तरह हॉस्पिटल्स में भी पैसा चार्ज करते, जबकि वो लोग सोसाइटी के लिए सर्विस देते, बट वो लोग भी पैसा चार्ज कर रहे. क्यों चार्ज कर रहे? वो लोगों को भी अपने स्टाफ को सैलरी देना रहता. दे नीड टू पे सैलरीज टू देयर डॉक्टर्स, दे नीड टू पे बिल्डिंग रेंट, दे नीड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, हॉस्पिटल्स है, या कई सारे रिक्रिएशनल क्लब्स है, पार्क्स है, ये पब्लिक की सर्विस के लिए ओपन किए हुए हैं, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन देम, वो लोगों का जो मकसद है, वो लोगों का जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं? दे चार्ज फ्रॉम दी पीपल. So even though education institutes, hospitals, parks, recreational clubs, they do charge from the public, but still they fall under the category of not for profitable organizations. तो समझ में क्या आया? not for profitable organizations किसको बोलते? जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, लोगों की मदद के लिए काम करते. In this chapter we have total 15 problems. इसमें टोटल कितने प्रॉब्लम्स है? We have 15 problems. So total we have 15 problems, from which problem number 1, 2, and 3 are based on the topic receipts and payments. And from problem number 4 to problem number 10, the problems are based on income and expenditure account. And from problem number 11 to problem number 15, the problems are based on income and expenditure account along with balance sheet. But अपने एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स पूछते हैं, 5 मार्क्स के लिए जो प्रॉब्लम आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में से एक प्रॉब्लम आएगा, जो प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा.
तो 10 मार्क्स के लिए जो प्रॉब्लम आएगा इट विल बी फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 4 टू प्रॉब्लम नंबर 10. तो अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम से 10th प्रॉब्लम तक परफेक्ट हो गए तो अपने को 2 प्रॉब्लम्स अटेंड कर सकते हैं, 1 फॉर 10 मार्क्स एंड 1 फॉर 5 मार्क्स. बचा क्या प्रॉब्लम नंबर 11 टू प्रॉब्लम नंबर 15. द प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद बैलेंस शीट. तो ये अपने को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में नहीं पूछते. So we just need to be perfect with problem number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So from problem number 1 to problem number 10, if we are perfect, we can score 15 marks easily. So let us start the problems. Unit 3, Chapter 3, Accounting for Not-for-Profit Organizations. Page number 124. This is the page number of Telugu Academy textbook. So page number 124, question number 1. From the following details, prepare receipts and payments account. From the following details, prepare receipts and payments account. So what is receipt? Receipt का मतलब क्या? अपने को पैसे आ रहे. What is payment? Payment का मतलब क्या? अपने पास से पैसे जा रहे. If we are receiving, it will be termed as receipt. If we are paying, it will be termed as payment. यहाँ पे अपने को करना क्या है? Receipts and payments account बनाना है. पैसे आ रहे receipt में लिखना है, पैसे जा रहे payments में लिखना है. Here is the question. Opening balance of cash 1500, opening bank balance 4500, subscriptions collected and all. Here this is the question and here we have the solution. So here is the solution. First we'll be writing the heading as receipts and payments account. यहाँ पे आप organization का नाम लिखेंगे क्योंकि अपने को क्वेश्चन में organization का नाम दिया हुआ नहीं है. As we are not provided with the name of the organization, we are not writing anything. So here is the heading for the solution, receipts and payments account for the year ended. So here we'll be writing the name of the organization and here we'll be writing the year for which we are going to prepare receipt and payment. Here is the format, receipts amount rupees, payment amount rupees. Towards extreme left we'll be writing DR debit, towards extreme right we'll be writing CR credit. So first we are given with opening balance of cash, opening bank balance. Opening balance will always be represented as two balance brought down, which is 1500 cash, 4500 bank. So here it will be recorded as two balance brought down, cash 1500, bank 4500. Next we have subscriptions collected 8000. Subscriptions collected का मतलब क्या? अपने को पैसे आ रहे हैं. So if cash is coming, it will be shown as receipts. तो इसको हम receipts में बताएंगे. Two subscriptions collected 8000. Then again we have entertainment show receipts 4000. Again it is a receipt. Entertainment show के पैसे organization को आ रहे हैं. So again it is a receipt. It will be shown on receipt side as two entertainment show receipts 4000. Then again we have entrance fees received 2000. फिर से अपने को entrance fees के पैसे आ रहे हैं. Again it is a receipt. It will be shown on receipt side as two entrance fees received 2000 rupees. Then we have computer purchase 3000 rupees. तो इस बार क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं. तो इस बार हम पैसे अदा करेंगे. We need to make the payment. तो इस बार ऑर्गेनाइजेशन से पैसे जा रहे हैं. So it will be shown on payment side. क्या खरीद रहे हैं? हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं. So it will be shown on payment side as by computer purchase 3000. Then we have tournament expenses 3000. So tournament expenses, the name itself is suggesting we are making the payment towards tournament. So it is an expenses. It will be shown on payment side as by tournament expenses 3000. Then we have entertainment show expenses 1800. Again, we are incurring expenses towards entertainment show. It is a payment. It will be shown on payment side as by entertainment show expenses 1800. Then after entertainment show expenses, we have paid for periodicals 1200. Again, it is an expenditure. It will be again we are paying, so it will be shown as payments by periodicals. The amount for periodicals is 1200. Next, we have salaries paid 1200. Again, it is a payment. It will be shown on payment side as by salaries 1200. Then again, we have rent paid 4000 rupees. It is a payment. It will be shown on credit side as by rent 4000 rupees. Then we have cash in hand at close 1800. So it is considered as closing balance. Opening balance we have shown as two balance brought down, whereas closing balance we will be writing it as
क्लोजिंग बैलेंस विल बी रेटिंग इट एज बाई बैलेंस कैरीड डाउन. तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे हम बाई बैलेंस कैरीड डाउन कैश इन हैंड 1800. So as we had opening balance for cash and bank, we also need to show closing balance of cash and bank. जिस तरह opening balance cash bank दोनों का था, इसी तरह closing balance cash bank दोनों का बताना है. But in question we are given with the details of only cash in hand at close 1800. So now we need to find the value of cash at bank. तो ये जो 4000 है ये अपना आंसर है. How we got the answer? First we'll be doing the total. स्क्रीन चलेगी आपस में स्क्रीन पहले. So now we'll be doing the total. The total for receipt side is 4 plus 1 5, 6, 4 10, 18 plus 2 20. So the total on receipt side is 20. The total on receipt side is 20. The total on payment side is 3 plus 3 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,000. The total of receipt is 20,000, whereas the total on payment side is 16,000. तो इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? Total of receipt side 20,000 is more than total of payment side 16,000. So the total 20,000 will be recorded on receipt side as well as 20,000 will be recorded on payment side. The highest of the two will be recorded on both the sides. Now subtracting the total of 16,000 of payments with the total of 20,000 of receipts. तो जो पेमेंट का 16,000 है वो रिसीट के टोटल 20,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. Then will be left out with the value 4,000, which will be considered as closing balance of cash, which is shown here as cash at bank 4,000. तो ये क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ पे अपोजिट साइड टोटल के नीचे इस तरफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के कैश इन हैंड 1,800, कैश एट बैंक 4,000 फिर से बताएंगे. नेक्स्ट कंटिन्यूइंग विद सेकंड प्रॉब्लम विद द सेम टॉपिक रिसीट्स एंड पेमेंट्स. Page number 124, question number 2. From the following details, prepare receipts and payments account of Officers Club for the year ended 31st March 2020. So here is the question. Again, we are asked to prepare receipts and payments. So here is the heading. Here is the solution. The heading will be taken as receipts and payments account of Officers Club. इससे पहले के प्रॉब्लम में ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिए थे. In this problem, we are provided with the name of the organization, which is Officers Club. And also we are provided with the date. So the heading for receipts and payments will be receipts and payments account of Officers Club for the year ended 31st March 2020. So again, the format for receipts and payments is receipts amount rupees, payment amount rupees. Towards extreme left will be writing BR debit. Towards extreme right will be writing CR credit. So what are the rules for preparing receipts and payments? If cash is coming, if we are receiving the amount, if the organization is receiving the amount, it should be shown as receipt. And if the organization is making the payment, it should be shown on payment. अगर पैसे आ रहे ऑर्गेनाइजेशन को तो रिसिप्ट्स में बताना है. अगर पैसे जा रहे ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट्स में बताना है. How do we start the problem? First we'll be showing the opening balance, which is given here as opening cash in hand 1,400, opening cash at bank 3,400. Here it will be shown as two balance brought down. Cash in hand 1,400, cash at bank 3,400. Opening balance will always be shown as receipts. Then we have subscriptions received 25,000. It is a receipt, so it will be shown on receipt side as two subscriptions received 25,000. Then after subscriptions we have donations collected 7,000. Again it is a receipt. Donations collected. पैसे आ रहे हैं organization को. It will be shown as receipt as two donations collected 7,000 rupees. Then after donations we have honorarium paid 6,000 rupees. What is honorarium? It is the amount paid to non-members of the organization for utilizing their services. जो लोग organization का हिस्सा नहीं रहते उन लोगों के जो services हम use करते so in honor of a person for utilizing their services who is not a member of the organization. तो उनको जो payment करते हम उसको honorarium बोलते. As we are paying the amount,
it will be shown as payments. तो हम उसको अब यहाँ पे payments में बताएंगे by honorarium pay 6,000 rupees. Then after honorarium we have rent paid 3,000. It is a payment, so it will be shown on payment side as by rent 3,000 rupees. Then after rent we have tournament expenses. It is an expenditure, so it will be shown on payment side as by tournament expenses 1,000 rupees. Then after tournament expenses we have shares purchase 5,000 rupees. As the organization is purchasing shares, organization needs to make the payment. So it is a payment. It will be shown on payment side as by shares purchase 5,000. Then after shares we have entertainment fee received 2,600. It is a receipt, so it will be shown on receipt side as two entrance fees received 2,600. Entrance fees received. Then we have paid for internet connection 1,500. So as we are making the payment, it will be shown on payment side as by internet connection 1,500. Then we have electricity charges 500 rupees. It is a payment. It will be shown on payment side as by electricity charges 500 rupees. Then after electricity charges, we have repairs and maintenance. So it is a payment 400. It will be shown on payment side as by repairs and maintenance 400 rupees. Then after repairs and maintenance, we have stationery 500. It is a payment, so it will be shown as on payment side as by stationery 1,000 rupees. Then after stationery, we have stationery, it was 500 rupees. Then we have postage 1,000 rupees. It is a payment, so it will be shown on payment side as by postage 1,000 rupees. Then after postage, we have dinner expenses 1,500. Again, it is an expenditure. It will be shown on payment side as by dinner expenses 1,500. Then again, we have cash in hand at the end 4,000 rupees. So at the time of beginning, opening balance was given for cash in hand and cash at bank, whereas closing balance is only given for cash in hand. So similar to our previous problem, here also we are given with only closing balance of cash. So we need to find the closing balance of bank. First, we'll be showing closing balance of cash as by balance carried down. Opening balance will always be shown here as to balance brought down, whereas closing balance will always be shown here as by balance carried down. So cash in hand 4,000 rupees. Now we need to find the value of closing balance of cash at bank 15,000. This is our answer. How we got this answer? Subtracting the total of payment from the total of receipts. First we'll be doing the total of receipts. 7 plus 2, 9, 9 plus 25,000, 25 plus 7, 25, 32, 34, 35, 38, 39,400. The total of receipt is 39,400, whereas the total of payment is 6 plus 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24,400. The total of receipt is 39,400, whereas the total of payment is 24,400. So writing the highest total among the of the two on both the sides, 39,400 will be recorded on receipt side, 39,400 will be recorded on payment side. Subtracting 24,400 from 39,400, this is our answer, which is closing balance of cash at bank 15,000. How we got this 15,000? We have subtracted the total of payment 24,400 from the total of receipt 39,400, which will be shown here as cash at bank. In the next problem, problem number 3. This is the last problem for the topic receipts and payments. Page number 125, question number 3. तो इन 3 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से है, इसमें से एक प्रॉब्लम अपने को एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ संदीपनी एजुकेशनल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. Balance of cash, bank balance, and we are provided with other details. So till now we have solved 2 problems. तो हम प्रॉब्लम शुरू किस पे कर रहे थे? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पे शुरू कर रहे थे, खत्म किस पे कर रहे थे? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन पे खत्म कर रहे थे। So the first point to remember for solving the problem of receipt and payment is that it always starts at opening balance, which will be shown as to balance brought down, and it always ends at closing balance, which will be shown as by balance carried down. अब ये प्रॉब्लम में हम 2 और नए पॉइंट्स सीखेंगे जो अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट्स में काम आते हैं। So here we are asked to prepare receipts and payments account of Sandeepani Educational Society for the year ended 31st March 2020. So here is the heading, receipts and payments account of Sandeepani Educational Society for the year ended 31st March 2020.
This problem ये प्रॉब्लम जो एंड हो रहा वो 31 मार्च 2020 में एंड हो रहा, तो इससे जो एक साल पहले आता वो 2019 आता. So our problem is related to year 2019 to 2020, which will be considered as current year. इसको हम बोलेंगे current year. अब 2019 से पहले क्या आता? 2018. इधर 2020 से पहले क्या आता? It will be 2019. इसको हम बोलेंगे previous year. Previous year. After 2019, it is 2020. Then after 2020, it is 2021, which will be considered as next year. तो ये बेसिक से हम कैसा फाइंड करें? अपने को क्वेश्चन में जो डेट दिया था, इट वाज 31 मार्च 2020. इसको बेस बना के हम बाकी के ईयर्स फाइंड करें. तो वॉट एवर द डेट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वी नीड टू टेक इट एज दिस 2020. इससे एक साल पहले क्या आता? 2019. तो प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू करंट. इसको हम क्या बोलेंगे? करंट ईयर. करंट ईयर क्यों बोल रहे हैं? ये अपने प्रॉब्लम में दी हुई डेट है. सो आवर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द करंट ईयर विच इज 2019 टू 2020. अब 2019 से पहले क्या आता? 2018. 2020 से पहले क्या आता? 2019. ये गुजर गया 100 साल है. इट इज प्रीवियस ईयर. अब फिर 19 के बाद क्या आता? 20. फिर 20 के बाद क्या आता? 2021. तो हम इसको क्या बोलिए? दिस इज 2021. 2021. 2021. तो अब इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर. So the first point which we have remembered for solving the problem of receipt and payment is that it starts at opening balance to balance brought down and ends at closing balance by balance carried down. The second point that we need to remember is that any amount can be recorded as receipt or payment, whether it is related to previous year or it is related to current year or it is related to next year. दूसरा पॉइंट जो याद रखने का है वो क्या है? कोई भी अमाउंट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो रिसीप्ट में या चाहे वो पेमेंट हो. वो गुज़िश्ता साल से रिलेटेड रहने दीजिए, करंट ईयर ये साल से रिलेटेड रहने दीजिए, या अगले साल नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रहने दीजिए. एनी अमाउंट कैन बी शोन व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर रिसीप्ट एंड पेमेंट. ये साल के पैसे है तो भी बता सकते, गुज़िश्ता साल के पैसे है तो भी बता सकते, अगले साल के पैसे है तो भी बता सकते. लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम. So here we have the heading receipt and payment account of Sandipani Educational Society for the year ended 31st March 2020. अब ये 2020 में खत्म हो रहा, तो स्टार्ट कब हुआ? ये 2019. तो 2019 में स्टार्ट हुआ. तो our current year is related to the year 2019 to 2020. So first the format for receipts and payment is receipts amount rupees, payment amount rupees. How do we start the problem? First we'll be showing opening balance as to balance brought down. ये receipts and payments का पहला पॉइंट है. To balance brought down, which is given here as balance of cash 2,500, bank balance 3,000. So here it will be shown as to balance brought down. To balance brought down, cash in hand 2,500, cash at bank 3,000 rupees. Then after this we have subscriptions received for 2018, 2019 and subscriptions received for 2019, 2020. अपना प्रॉब्लम कौन से ईयर से रिलेटेड है? 2019 to 2020. So for this will be considered as previous year amount and this will be considered as current year amount. क्योंकि अपना प्रॉब्लम 2019 2020 का है, तो ये अपना करंट ईयर अमाउंट है. ये जो 2018 2019 है ये प्रीवियस ईयर अमाउंट है. तो व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? एनी अमाउंट कैन बी रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट और पेमेंट, whether it is related to previous year or it is related to current year or it is related to next year. तो हम क्या करेंगे? दोनों सब्सक्रिप्शन अमाउंट बता लेंगे. As we are receiving the amount towards subscription, it will be shown as receipt as टू सब्सक्रिप्शंस फॉर 2018 टू 19 का अमाउंट बताएंगे, 2019 टू 20 5,000, 19-20 का अमाउंट बताएंगे. नेक्स्ट we have donations received 2,000. So we are receiving the amount, so it will be shown as receipt. 2 donations. यहाँ पे बताएंगे आप 2 donations received 2,000 rupees. Then we have salaries paid 1,000 rupees. It is a payment. It will be shown on payment side as by salaries 1,000 rupees. Then after salaries we have life membership fee received. It is a receipt, so it will be shown on receipt side as to life membership fee received 3,000 rupees. So 2 life membership fees
received 3,000 rupees. After life membership fees, we have rent paid in advance 1,500 rupees. It is a payment, though we are paying in advance, though the amount belongs to next year, it can be shown as payment as by rent paid in advance 1,500 rupees. Then after rent paid in advance, we have honorarium paid 2,500. What is honorarium? It is the amount paid to one person who is not a member of the organization. By honorarium paid 2,500 rupees. Then after honorarium, we have government securities purchase 2,000 rupees. As we are purchasing the security, we need to make the payment. So it is a payment. It will be shown on payment side as by government securities purchase. By government securities purchase 2,000 rupees. We need to write the spelling completely government. We cannot write shortcuts in examination. Then after government securities, we have rent paid for 2018 to 19, 500. Rent paid for 2019 to 20, 2,500. Our problem is related to the current year 2019 to 2020. So the amount 2,500 which belongs to 2018 to 2019 is the amount related to previous year. तो हम क्या सीखे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते वक्त गुज़िश्ता साल का अमाउंट प्रीवियस ईयर का भी लिख सकते हैं, ये साल का अमाउंट करंट ईयर का भी लिख सकते हैं, एंड साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी लिख सकते हैं. जैसा हम सब्सक्रिप्शन फॉर 18, 19, 19, 20 रिसिप्ट्स में दोनों बताए, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, उसी तरह रेंट पेड फॉर 18, 19, 19, 20 दोनों बताएंगे पेमेंट्स में. बाय रेंट पेड फॉर 2018, 2019 500, 2019, 2020 2,500. Then we have building fund received 4,000 rupees. It is a receipt. It will be shown on receipt side as to building fund received 4,000 rupees. After building fund, we have tournament expenses 800 rupees. It is a payment, so it will be shown on payment side as by tournament expenses 800 rupees. Then after tournament expenses, we have postage and stationery 500 rupees. It is a payment, so it will be shown on payment side as by postage and stationery 500 rupees. Then after postage and stationery, we have purchase of books 4,500 rupees. As we have purchased the books, we need to make the payment. So it is a payment. It will be shown on payment side as by books 4,500 rupees. Now doing the total on both the sides. The total on both the sides, first we'll be doing the total on receipts followed by the total of payments. So plus 7 plus 2, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23,500. The total on receipt is 23,500. Whereas the total on payment is 4,000. Yes, 7,700. This is our answer. 4,500 plus 5,000, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,000. And here 15,000 plus 800, 15,800. So total of receipt 23,500 is more than the total of payment, which is 15,800. Now subtracting 15,800 from 23,500. So 23,000 में से पहले अपन 15 निकाल देंगे. So it is 8,000. 8,000 फिर 500 में से 800 माइनस करना है. तो और 300 का शॉर्टेज है. So subtracting 300 from 8,000, it is 7,700. It should be shown here as by balance carried down 7,700. In our previous two problems, closing balance of cash was given. गुज़िश्ता दो प्रॉब्लम्स में फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में क्या था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश स्पेसिफाई करा हुआ था. तो हम क्या कर रहे थे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक कैश एट बैंक फाइंड कर रहे थे. बट इन दिस प्रॉब्लम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड. तो किसी की भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया. अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस देता तो हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करते. बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करते. But as nothing has been specified in the question with regards to closing balance, either for cash or for bank, we'll be just showing the value as by balance carried down 7,700. So with this, we have completed the topic receipts and payments, and we have solved three problems. Question number 1, question number 2, question number 3. Out of these three problems, one problem will be asked for 5 marks. So for solving the topic receipts and payments, we need to remember 3 points, of which 2 points have been covered in these three problems. The first point is we need to start the problem with true balance brought down opening balance, and we need to end the problem with by balance carried down closing balance. हम ऐसा opening balance true balance brought down पे शुरू करते, ऐसा by balance carried down closing balance पे खत्म करते. This is our first point for solving the problem of receipt and payment. What is our second point? Any amount can be recorded as receipt or payment. कोई भी amount हम receipt में या payment में record कर सकते, whether it is related to previous year or it is related to current year or it is related to next year. गुज़िश्ता साल का अमाउंट है तो भी बता सकते, ये साल का अमाउंट है तो भी बता सकते, अगले साल का अमाउंट है तो भी बता सकते. The third point is we have two natures, revenue nature and capital nature.
तो थर्ड पॉइंट में अपने को क्या है, एक आता रेवेन्यू नेचर, और एक आता कैपिटल नेचर। व्हाट इज रेवेन्यू नेचर, व्हाट इज कैपिटल नेचर? एनी आइटम विच इज ऑफ रिपीटेटिव इन नेचर, जो भी चीज वापस रिपीट होते रहती उसको हम रेवेन्यू नेचर में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज पेड, सैलरीज पेड। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिल्डिंग परचेस्ड। Salary is paid, it is of revenue nature because every month we need to make the payment towards salaries. Organization को हर महीना salaries के लिए amount pay करना पड़ता, so it will be considered as revenue nature. Whereas purchase of building, इसमें भी आप पैसे अदा करते हो, we need to make the payment as we are purchasing the building, we need to make the payment to the owner. But इसका जो payment है वो सिर्फ एक बार करते हैं आप. At the time of purchasing the building, we will be making the payment. Once the amount is paid, you are not going to pay it every year. जैसे कि सैलरी हर महीना पे करते, वैसा जो बिल्डिंग खरीदे आप उसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग रिकॉर्डिंग दीज टू थिंग्स, सैलरी इज पेड, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दीज टू थिंग्स, सैलरी इज पेड एंड बिल्डिंग परचेज, both these will be recorded in payment because at the time of paying salaries we are making the payment, so it will be shown as by salaries. At the time of purchasing the building we are making the payment, so it will be shown as by building. बट इन दोनों का नेचर अलग अलग है। सैलरीज का नेचर रेवेन्यू नेचर है क्योंकि ये बार बार हम पे करते, वही बिल्डिंग का जो नेचर है वो कैपिटल नेचर है क्योंकि हम बिल्डिंग एक ही बार खरीदते, इसकी पेमेंट बार बार अदा नहीं करते। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का तीसरा पॉइंट ये है, कोई भी नेचर का अमाउंट हम रिकॉर्ड कर सकते, चाहे वो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड रहने दीजिए या चाहे उसका ताल्लुक रेवेन्यू नेचर से रहने दीजिए या कैपिटल नेचर से रहने दीजिए। Any amount can be shown on receipts and payments account, whether it is related to revenue nature or it is related to capital nature. So I conclude the topic receipts and payments by repeating those 3 points which we need to remember while solving the problem of receipts and payments. The first point is it always starts at opening balance, which is shown as to balance brought down, and ends at closing balance, which will be shown as by balance carried down. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन पे शुरू होता, बैलेंस कैरिड डाउन पे खत्म होता। ये पहला पॉइंट था। व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? एनी अमाउंट कैन बी शोन एज रिसिप्ट और पेमेंट वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कोई भी अमाउंट हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में बता सकते हैं, चाहे वो गुज़िश्ता साल से रिलेटेड रहने दीजिए, ये साल से रिलेटेड रहने दीजिए या अगले साल से रिलेटेड रहने दीजिए। आई मीन द थर्ड पॉइंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज दैट एनी आइटम कैन बी शोन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट irrespective of its nature, whether it is of revenue nature or it is of capital nature. कोई भी अमाउंट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में, कोई भी आइटम हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में बता सकते, चाहे वो रेवेन्यू नेचर हमेशा होने वाली चीज रहने दीजिए या कैपिटल नेचर कभी कभार होने वाली चीज रहने दीजिए। जैसे कि वी हैव टेकन एग्जांपल्स ऑफ सैलरीज एंड बिल्डिंग। सैलरीज पेड भी आप पेमेंट में बता सकते, परचेज ऑफ बिल्डिंग भी आप पेमेंट में बता सकते। With this we conclude the topic receipts and payments. Now coming to our next topic, income and expenditure account. So in our textbook we have problems from problem number 4 to problem number 10 based on the topic income and expenditure. Of these 7 problems, one problem will be asked for 10 marks. So the total weightage of problems for this chapter in Telangana State Board of Intermediate Education is for 15 marks. A question for 2 marks can also be asked for theory. तो 15 मार्क्स तो कंफर्म है आपको, और दोनों 15 मार्क्स आपको प्रॉब्लम्स में ही आएंगे। एक प्रॉब्लम, ये जो 3 प्रॉब्लम्स करे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इसमें से एक प्रॉब्लम 5 मार्क्स के लिए आएगा। अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 4 to 10 ये 7 प्रॉब्लमों में से एक प्रॉब्लम 10 मार्क्स के लिए आएगा। अब जो रेगुलर एग्जाम लिखे आप उसमें से सेम प्रॉब्लम नंबर 4 आया था, जिसमें से वैल्यूज थोड़ा स्लाइड चेंज कर दी थी। कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। Continuing with the next topic, which is
income and expenditure account. So here we have problem number 4, page number 126, question number 4. This was the question which was asked in regular examination by changing the values slightly. Same problem आया था, कुछ values change कर दिए थे. So from problem number 4 to problem number 10, 7 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम अपने को फाइनल एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स के लिए. इससे पहले जो 3 प्रॉब्लम्स करे रिसीप्ट एंड पेमेंट, उसमें से एक प्रॉब्लम आएगा 5 मार्क्स के लिए. Let us start the topic. Kamaradi Youth Club gives you their receipt and payments account and other information and request you to prepare their income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम कब खत्म हो रहा है? 2019 में खत्म हो रहा है. तो शुरू कब हुआ? इससे एक साल पहले ले लेना है. इट विल बी 2018. So our current year for the problem will be 2018 to 2019. 18 से पहले जो भी आएंगे वो प्रीवियस ईयर में ले लेंगे हम. 2019 के बाद जो भी आएंगे वो हम नेक्स्ट ईयर में ले लेंगे. तो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स के जो 3 पॉइंट्स थे, व्हाट वर द 3 पॉइंट्स? Receipts and payments starts with opening balance to balance brought down and with closing balance by balance carried down. What was the second point? Any amount can be recorded for receipts and payment, whether it is related to previous year or it is related to current year or it is related to next year. What was the third point? Any amount can be recorded irrespective of its nature in receipts and payments. Revenue nature हमेशा होने वाली चीज है तो भी रिकॉर्ड करेंगे. कैपिटल नेचर कभी कभार होने वाली चीज है तो भी रिकॉर्ड करेंगे. These 3 points will be exactly opposite for solving the problem of income and expenditure account. तो अपने को क्वेश्चन में receipts and payments account बना के दिया हुआ रहता है, provided with some additional information, and we are asked to prepare income and expenditure account. तो अपने को receipts and payments बना के देंगे, कुछ additional information देंगे. On the basis of that information, we need to prepare income and expenditure account. तो ये जो 3 points है receipts and payments के, income and expenditure के लिए, वो तीनों के तीनों points opposite रहेंगे. What was the first point? It starts at opening balance to balance brought down and at closing balance by balance carried down. यहाँ का फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? हम ना ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे. रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में दोनों लिखते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोनों नहीं लिखेंगे. What was the second point for receipts and payments? Previous year amount, current year amount, next year amount, all three can be recorded. यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पॉइंट क्या रहेगा? Only amount related to current year will be recorded. And any amount included of previous year or next year will be subtracted. वहां पे हम क्या करते थे? Previous year, current year, next year सब आइटम लिखते थे. यहाँ पे अपने को क्या करना है? Previous year का अमाउंट कुछ मिला हुआ है तो उसको subtract करना है. Next year का अमाउंट कुछ मिला हुआ है तो उसको भी subtract करना है. Only amounts related to current year will be shown. What was the third point for receipt and payment? आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर. हमेशा होने वाली चीज रेवेन्यू नेचर, उसको भी बताए थे. जैसे कि अपन एग्जांपल लिए थे सैलरीज पेड, पेमेंट में लिखे थे. फिर एक और एग्जांपल लिए थे बिल्डिंग परचेज, का नेचर कैपिटल नेचर है, उसको भी हम पेमेंट में बताए थे बाय बिल्डिंग परचेज. और कमिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ का जो थर्ड पॉइंट आएगा, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो हमेशा होने वाली चीजें रहेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे. एंड द आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड. देखिए सैलरीज पेड, बिल्डिंग दोनों रिसीप्ट एंड पेमेंट में बताए थे. बट ये दोनों में से हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त सिर्फ सैलरीज पेड लिखेंगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग नहीं लिखेंगे. Coming to the problem, here is the heading: income and expenditure account of Kamareddy Youth Club for the year ended 31st March 2019. तो क्वेश्चन में जो है फॉर्मेट जो था अपना, रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट, ये क्वेश्चन है आपका. तो दीज रिसीप्ट्स विल बी कन्वर्टेड एज इनकम. मतलब जो क्वेश्चन में जो 2 में दिया हुआ रहेगा और पेमेंट्स में बाई में जो दिया हुआ रहेगा, ये आपका क्वेश्चन था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स. तो ऑफ दिस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. So receipt will be converted as income, whereas payment will be converted as expenditure. मतलब आपका क्वेश्चन में जो 2 था वो सोल्यूशन में बाई आएगा, आपके क्वेश्चन में जो बाई है वो सोल्यूशन में 2 आएगा. Whatever is given as receipts in the question, it will be shown on credit side as income in the solution, and whatever is given as payment on question, it will be shown as expenditure in the solution.
let us continue with the problem. So Kama Reddy Youth Club gives you the receipts and payments with the additional information. So with this, we need to prepare income and expenditure. This was the heading, income and expenditure account of Kama Reddy Youth Club for the year ended 31st March 2019. The format is expenditure amount rupees, income amount rupees. So first point is, we are not going to record opening balance and closing balance. Receipts and payments में दोनों बताते थे, income and expenditure में दोनों नहीं बताएंगे. So two balance breakdown को हम record नहीं करेंगे. Then we have subscription 70,000. Also we have two adjustments on subscriptions. Outstanding subscriptions on 31st March 2019, 1,500. This will be added, and subscriptions received in advance on 31st March 2019, 500. This will be subtracted. क्यों ऐसा? Outstanding subscription को करंट ईयर का अमाउंट है, इसलिए उसको ऐड करेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या? अगले साल के पैसे हम एडवांस में अभी से ले ले. तो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में हम अगले साल का अमाउंट बता सकते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगले साल का अमाउंट नहीं बताएंगे. सो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. So this is how we show subscriptions. यहाँ पे जो टू सब्सक्रिप्शन 70,000 है, फर्स्ट इट विल बी शोन एज इनकम एज बाय सब्सक्रिप्शन 70,000. फिर इस पे जो दो एडजस्टमेंट है, क्या है? पहला एडजस्टमेंट क्या है? Outstanding subscriptions 1,500. This will be added plus outstanding subscription 1,500. So 70 plus 1,500, it becomes 71,500. 71,500. Then again we have another adjustment on subscription as subscriptions received in advance 500 rupees. क्योंकि ये अगले साल के पैसे है, next year amount will be subtracted. उसको यहाँ माइनस करेंगे, माइनस received in advance 500 rupees. So subtracting 500 from 71,500. We are left out with the value 71,000. After subscriptions, we have donations received for mineral water 80,000. Donations received by a not-for-profit organization are of two types. Donations received by not-for-profit organizations are of two types. General donation, specific donation. General donation, specific donation. जनरल डोनेशन का मतलब क्या? स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या? डोनेशन का मतलब क्या? लोग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को आके चंदा दे के चले जाते. द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन as donation from outsiders are considered as donation, but these donations are of two types. One is general donation, another one is specific donation. What is general donation? The donor of the amount will not specify the purpose for which the amount is to be utilized. जो साहब पैसे डोनेट कर रहे, तो साहब बिना कुछ बोले आपको पैसा देंगे, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है वो कुछ नहीं बोलेंगे. So now it is the responsibility or it is the duty of the organization to use it effectively. Organization की मर्जी है कि वो पैसा कैसा भी अच्छे से यूज कर सकते हैं. But specific donation क्या रहता है? The donor of the amount will specify you the purpose for which the amount is to be utilized. तो साहब पैसे डोनेट कर रहे हैं, तो वो आपको बोल के देंगे कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है. अगर डोनेट करने वाले बोल के दे रहे कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे कि डोनेशन फॉर ग्राउंड, डोनेशन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डोनेशन फॉर मैरिज, डोनेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ऐसा कुछ दे रहे तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है. सिर्फ डोनेशन देके जा रहे तो वो जनरल डोनेशन है. In the time of solving the problem of income and expenditure, general donations can be recorded, specific donations cannot be recorded. अपने को याद क्या रखना है? अगर डोनेशन का अमाउंट है तो फर्स्ट वी नीड टू कैटेगराइज इट वेदर इट इज ए जनरल डोनेशन और इट इज ए स्पेसिफिक डोनेशन. अगर वो जनरल डोनेशन है तो उसको रिकॉर्ड करना है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है. तो अपने प्रॉब्लम में डोनेशन रिसीव्ड फॉर मिनरल वाटर बोल रहा, तो यहाँ पे जो पैसे मिल रहे, पैसे डोनेट करने वाले साहब बोल के दे रहे आपको कि वो पैसा मिनरल वाटर के लिए इस्तेमाल करना है, तो इट बिकम्स ए स्पेसिफिक डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन बिकम्स ए लायबिलिटी. अब ऑर्गेनाइजेशन उसको सिवाय मिनरल वाटर के कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकती. इट इज ए लायबिलिटी, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. तो हम क्या करेंगे? अब इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो जनरल डोनेशन अगर रहता तो हम उसको रिकॉर्ड करते थे, बट क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट, ये जो डोनेशन 80,000 है, हम इसको अपने सोल्यूशन में कहीं भी नहीं बता रहे क्योंकि वो स्पेसिफिक डोनेशन है. आफ्टर डोनेशन वी हैव
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 42,000, इस पे अपने को एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड इज 45,000. What is the amount that we are selling it? The amount we are making it is 42,000 and the value of the furniture sold is 45,000. तो फर्नीचर बेच रहे आप तो 45,000 का है, जबकि आप उसको बेच रहे कितने में? 42,000 में बेच रहे. So we are suffering a loss of 3,000. At the time of starting the problem, I said that receipt will be converted as income and payment will be converted as expenditure. But क्योंकि ये फर्नीचर बेचने से लॉस हो रहा आपको, so this will be shown on payment side as to loss on sale of furniture 45,000 book value minus 42,000 sale price. So 3,000 loss will be shown on payment side. तो हम यहाँ पे पेमेंट में बताएंगे to loss on sale of furniture 45,000 minus 42,000. 45,000 क्या है? उसकी बुक वैल्यू है, माइनस 42,000 क्या है? सेल प्राइस है. तो कितने का लॉस हो रहा? 3,000 का लॉस है. देन आफ्टर वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,200. इन्वेस्टमेंट्स एक ही बार करते हैं, वो कैपिटल नेचर का है, बट ये इन्वेस्टमेंट पे अपने को जो इंटरेस्ट आता ये रेवेन्यू नेचर का है, ये बार बार आता, तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इट विल बी शोन एज इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,200. Now we are done with all the items of receipts. Now we will be doing the items of payments by salaries. जो पेमेंट्स है वो अपने सोल्यूशन में एक्सपेंडिचर में आएंगे, मतलब जो क्वेश्चन में बाई है वो सोल्यूशन में 2 में आएंगे. तब यहाँ पे अपने को पहली चीज क्या है? बाई सैलरीज. इट इज ए पेमेंट, सो इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर. तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट काम में आ रहा है, रेवेन्यू नेचर की चीज. रेवेन्यू नेचर की चीज लिखना है, कैपिटल नेचर की चीज नहीं लिखना है. तो सैलरीज इट कैन बी शोन एज एक्सपेंडिचर. टू सैलरीज 20,000 रुपीज. टू सैलरीज 20,000 रुपीज. आफ्टर सैलरीज वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ये हम एक ही बार डिपॉजिट करते हैं, सो इट बिकम्स कैपिटल नेचर, सो इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड हियर. एंड वी हैव परचेज ऑफ फर्नीचर 35,000. फर्नीचर अगेन इट इज एन आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, इट कैन नॉट बी शोन एज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव परचेज ऑफ शेयर 20,000. Even we purchase share only once, again it is an item of capital nature, it cannot be recorded. Then we have printing and stationery 20,000. So printing and stationery का काम बार बार होता, it can be shown as expenditure as to printing and stationery 20,000. Then after printing and stationery we have general expenses 6,000. Again it is of revenue nature, it can be shown. So here it will be shown as to general expenses 6,000. Then we have balance carried down. This is closing balance. So here we cannot show closing balance. जैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बताते थे, वैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं बताएंगे. और we find the answer. ये 32,200. This is our answer. ये कैसा आया फाइंड करेंगे. First we'll be doing the total of income and then we'll be doing the total of expenditure. So here the total of income is 70 plus 10 80, 80 plus 1 81 plus 200 81,200. So the total of income is 81,200, whereas the total of expenditure is 20, 20, 40, 46, 49,000. So the total income is 81,200, whereas the total of expenditure is 49,000. अब इन दोनों में कौन सा अमाउंट ज्यादा है? 81,200 is more than 49,000. So 81,200 will be recorded on both the sides. 81,200 will be recorded on expenditure side as well as 81,200 will be recorded on income side. Now we'll be subtracting the small value from the highest value. 49,000 will be subtracted from 81,200. अपने को ये प्रॉब्लम में खर्चा कितना आ रहा? 49,000 आ रहा. आमदनी कितनी आ रही? 81,200 आ रहा. अपनी आमदनी अपने खर्चे से ज्यादा है. Our income is more than our expenditure. So we'll be left out with amount, surplus amount. अपने को कुछ पैसे बचते. तो ये 81,200 की इनकम में से 49,000 का एक्सपेंडिचर अगर आप पूरे को निकाल भी दे रहे, और सब्ट्रैक्टिंग 49,000 फ्रॉम 81,500, और 1,000 अगर इसमें कर लिए तो 50 हो जाते. 50 से 80 के लिए 30,000, फिर ऊपर के 1,200, 30, 31, 32,200. So this is how we got 32,200. We have subtracted 49,000 from 81,200. So we are left out with an amount of 32,200, which will be shown here as to surplus. अपने को जो पैसे कम पड़ रहे वो कौन सी तरफ कम पड़ रहे? एक्सपेंडिचर की तरफ कम पड़ रहे. तो फर्स्ट ईयर विल बी रेडी इट एज टू सरप्लस 32,200. ब्रैकेट्स में क्या लिखना है अपने को? एक्सेस ऑफ. ये साइड कौन सा है? एक्सपेंडिचर का साइड है. अगर हम नाम पहले किसका लिख रहे? इनकम का नाम लिख रहे. क्यों? हर किसी को पड़ोसियों की फिगर पहले रहती, अपनी बाद में रहती. So at the time of writing the item, first we will be writing the name of the neighbor first. As we are writing the amount towards expenditure, first we will be writing the name of income.
So here we'll be writing it as excess of income over expenditure. क्योंकि अपनी आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है, so we'll be writing it as excess of income over expenditure. Hope you all have understood the topic. Still, we are left out with 6 more problems from problem number 5 to problem number 10. Inshallah, we'll continue in next session. See you all. Thank you. हो जाओ